ओके जी। जी। जस्ट कंफर्म कर दें। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so far we have studied different phases of fluid. Okay, and how can we evaluate those phases, or how can we find out different values? ठीक है, इससे related I have shared some problem sessions as well. Okay, और थ्रू डिफरेंट वीडियोस मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस जो लास्ट 2-3 दिनों में मैंने अपलोड किए हैं, ट्यूटोरियल सेशंस, इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड दोज वीडियोस यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन एग्जाम। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, रेफरेंस डेट एंड रेफरेंस वैल्यूज। ओके, सो ये सारी जो टेबल हमने डिज़ाइन की हैं, how do we get these values, right? So that is a question. These values are given by different equations. Okay, so the values of u h s cannot be measured directly. We cannot measure these values directly, there is no way. Okay, we can measure these values by uh, other known properties such as pressure, temperature, specific volume, okay, density. Okay, so we can use these values, these properties, and their relation with these properties to find out these unknown properties, right? हम इनको directly measure नहीं कर सकते। Okay, but by using these equations, the जो भी equation है, ठीक है, उससे we can only find out the change in these properties, like delta u, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जब ये प्रॉपर्टीज फाइंड कर रहे होते हैं तो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज। ठीक है, एब्सोल्यूट एनर्जी फाइंड आउट करना इज डिफिकल्ट, एब्सोल्यूट इंथैल्पी फाइंड आउट करना इज नॉट वेरी इजी, सिमिलरली एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज आल्सो नॉट इजी टू फाइंड आउट। So what do? We assign a certain point of reference. हम for different liquids या for different substances we assign this frame of reference. Okay, this reference point. There is some temperature. जी, any question? Okay, so at any temperature we select, अब इसका criteria जो है वो different fluids के लिए different है. We will not discuss that criteria here, but we shall discuss the reference. Okay, so from this reference, at this reference, this again depends upon fluid, the type of substance. Okay, so for different substances, for example water, this reference point is different. For some other refrigerant, this reference point will be different. Okay, so at this point of reference we assume that these properties u, h, s are all zero. ओके, एंड यहाँ से हम फिर मेजर करना शुरू करते हैं। सो लेट्स से आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हेयर इज पॉइंट 1, यहाँ हम उसकी प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, एंड देन सेकेंड पॉइंट इज 2, यहाँ पर भी हम ये प्रॉपर्टी मेजर करते हैं। ओके, सो लकीली नॉर्मली अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें किसी भी पॉइंट पर हमें इस बात से गर्ज नहीं कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन हाउ मच दीज वैल्यूज चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। ठीक है,
सो दिस विल बी कांस्टेंट। अगर आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है तब भी यही होगा। अगर लेट्स से इन सम केस मैं इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को चेंज करके ये ले लेता हूँ, देन उस केस में स्टिल दिस चेंज विल बी सेम। ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ये जो चेंज। इस इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू कोट करता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको स्टडी करते हैं। लेट्स से यू आर हेयर, दिस इज अटक सिटी। ओके, दिस इज अटक सिटी, दिस इज रावलपिंडी, एंड दिस, लेट्स से दिस इज लाहौर। अब अटक सिटी से रावलपिंडी का एक डिस्टेंस है। ओके, इसी तरह अटक सिटी से लाहौर का भी एक डिस्टेंस है। हमने अटक सिटी को फिलहाल पॉइंट जीरो लिया हुआ है रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब हम इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रावलपिंडी एंड लाहौर। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these two points, Rawalpindi and Lahore? Let's say मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, this is 300 किलोमीटर्स। ओके, अब अटक से हटकर मैंने नेक्स्ट रेफरेंस ले लिया टेक्सला को। ओके, टेक्सला से रावलपिंडी का ये डिफरेंस है, टेक्सला से लाहौर का ये डिफरेंस है। बट दिस relative difference between Rawalpindi and Lahore is still the same, 300 kilometers ही रहेगा। ओके, दिस इज सेम फॉर बोथ केसेस। तो हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज किया, ऑल दो टेक्स्ट लाभ जो नया पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से रावलपिंडी शायद 40 किलोमीटर हो या 25 किलोमीटर हो, लेट्स से। ओके, एंड यहाँ से जो टेक्सला है, सॉरी, यहाँ से जो लाहौर है, it is 325 kilometers. Again, I am just assuming these values, but still ये 300 किलोमीटर रहेगा। यहाँ अटक के केस में दिस वाज, अटक से रावलपिंडी इज अराउंड 80 किलोमीटर्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हो जाता अटक से लाहौर वुड बी, अगेन आई एम अज्यूमिंग दिस वैल्यू, इट वुड बी 300 प्लस 380 किलोमीटर्स। ओके, बट स्टिल इन दोनों का डिफरेंस 300 किलोमीटर ही बनता है। रेफरेंस चेंज हुआ, रेफरेंस चेंज होने से इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सो हम इस, दिस मीन्स कि हम रेफरेंस कोई भी चूज करें, एक रीजनेबल रेफरेंस, प्रॉपर्टीज का आपस में जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ओके, सो दिस मीन्स हम किसी भी रेफरेंस से अगर कैलकुलेशन करें प्रॉपर्टीज़ की तो हमारा वो जो डेल्टा है उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी? Okay. So those relations give the changes in properties, not the values of properties at specified states. We need to choose a convenient reference state again. Reference state जो convenient हो हमारे लिए, ठीक है? And assign a value of zero for a convenient property or properties at that state. For example, water के लिए the state of saturated liquid at 0.01 degree centigrade is taken as reference state, ठीक है? And at this point of temperature, the internal energy and entropy are assigned zero values. हम zero values assign करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो नहीं है एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी की, ठीक है? बट फॉर
द प्रॉपर्टी मेजरमेंट, हम इसको जीरो साइन कर देते हैं. ओके. Then we have refrigerant R134A. For this, the point of reference is minus 40 degrees centigrade. Okay, at the reference state, and the enthalpy entropy at this point is zero. Okay, so some properties may have negative values as a result of the reference state chosen. अच्छा, इस reference state की वजह से there is a chance कि आपकी properties की values negative हो जाए कुछ properties की. But again, जब आप उसको delta करेंगे तो you will see in the upcoming courses उसका कोई it is not a problem until or unless आप same टेबल से वैल्यूज उठा रहे हैं. कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक बुक वन में से लेट से आप दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट वन एंड टू. सम प्रोसेस हैपेंड दैट यू हैव मूव फ्रॉम पॉइंट वन टू टू. ठीक है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको चेंज इन एंथैल्पी चाहिए डेल्टा एच. ठीक है, यानी कि एच टू माइनस एच वन. अब ऐसा नहीं है कि आप एच वन जो है वो बुक वन के स्टीम टेबल से लें. ठीक है. और बुक टू के स्टीम टेबल से आप एच टू की वैल्यू लें, कोई दूसरी बुक है. ठीक है. ऐसा करेंगे तो योर एनालिसिस विल बी रॉन्ग. आप या तो दोनों एच जो हैं वो बुक वन के स्टीम टेबल से लें या दोनों बुक टू के स्टीम टेबल से लें. ठीक है. सो दैट डेल्टा एच इन बोथ केसेस विल बी द सेम. ओके, ये बात क्लियर हुई है आपको? बिकॉज हो सकता है इस बुक वन में पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो और बुक टू में पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. However, in thermodynamics, we are concerned with changes in properties. ये अभी मैंने बात की. And the reference state chosen is of no consequence in calculations as long as we use values from a single consistent set of tables or charts. Okay. Now let's discuss the ideal gas equation of state. Okay. So for up till now we have studied the different. So far we have studied steam tables, right? We have studied property tables, property charts. Okay. So प्रॉब्लम क्या इन प्रॉपर्टीज टेबल का या प्रॉपर्टीज चार्ट का, आपको क्या प्रॉब्लम महसूस हुआ है इनको यूज करने का? आपने असाइनमेंट वन सॉल्व किया है, ठीक है, तो या जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए इन द क्लास, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस होल थिंग? क्या आपने महसूस किया? कोई अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश. सर एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं होती. एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करना, यस यू कैन से कि उसके लिए थोड़ा आपको वर्क करना पड़ता है. एग्जैक्ट वैल्यूज ऑल तो हमें मिल जाती हैं बट काम करना पड़ता है उसके लिए. ठीक है. काफ़ी लेंथी प्रोसेस है. अगर प्रेशर या टेम्परेचर पर वैल्यूज़ हमें ना पता हों तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ती है. ठीक है, हमें डाटा ढूंढना पड़ता है. एंड देयर इज़ अ हाई चांस कि हम इतने ज़्यादा डाटा में कोई ना कोई गलती करते हैं. लेट से हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखना था, इंथाल्पी की वैल्यू. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने गलती से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंथाल्पी की वैल्यू देख दी. ठीक है. There is a chance. So to avoid all these things, there are different equations, ठीक है, जिनको हम equation of state कहते हैं. So any equation that relates pressure, temperature, specific volume or other properties of a substance at equilibrium state of a substance is called equation of state. So there are equation of states available. ठीक है. The simplest and best known equation of state is called in the gas phase. अच्छा, ये हम सिर्फ gas phase की बात कर रहे हैं. It's called the ideal gas equation. You are already familiar with this equation. Okay.
So this equation predicts the PVT behavior of a gas quite accurately within some properly selected region. Okay. अब ये प्रिडिक्ट तो सही कर देती है बिहेवियर ऑफ अ गैस, बट उससे पहले हमें ये श्योर करना होता है कि हम जो अपना ये एनालिसिस कर रहे हैं वो एक प्रॉपरली सेलेक्टेड रीजन में है। ठीक है, लेट्स सी इसके बारे में क्या अभी हम बात करेंगे। गैस, अच्छा, अब नॉर्मली अभी भी ऐसे हुआ है कि हम वी वर यूजिंग गैस एंड वेपर एज ऑल्टरनेटिव वर्ड्स। ओके, ऑफन यूज्ड एट synonyms, यानी कि एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हम यूज़ कर रहे थे इनको। कहीं पर हम गैस कह देते थे, कहीं पर हम वेपर कह देते थे। ठीक है, बट इन रियलिटी वेपर फेज के अंदर, दिस इज योर वेपर फेज। ओके, here the term gas strictly applies when we are above the critical temperature। ठीक है, गैस लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें जब हम इस क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हों, यानी कि यहाँ इस रीजन में हो, either in this region or in this region। So all of this region means we are talking about gas। Okay, या हम यहाँ से बहुत बियॉन्ड चले जाएं इन दिस रीजन, हेयर इस रीजन की बात कर रहे हैं। अंडर दिस रीजन, ये जो रीजन है आपका यहाँ वाला, हेयर वी हैव हेयर वी हैव वेपर्स। ओके, सो इस रीजन में वी से कि दिस इज अ वेपर। ओके, सो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। So, vapor normally implies that the gas is not far from the state of condensation। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन के स्टेट से दूर नहीं। ओके, सो अगेन यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस इक्वेशन। इसकी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म अभी तक आपने पढ़ी है, प्रेशर, दैट इज प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज इक्वल टू, किसी को याद है आइडियल गैस इक्वेशन? PV is equal to M NRT. R T। Okay, so this is the ideal gas equation where P is the pressure of the gas, absolute pressure. V is the volume of the gas. This is not specific volume. Okay, this is the volume. K meter cube. M is the mass. R is the gas constant, and T is the temperature of the gas in kelvins. Okay, absolute temperature। ओके, दिस इज जस्ट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसी मैथ को मैं यहाँ से लाकर यहाँ डिवाइड कर दूँ, सो दिस विल बिकम स्मॉल v, which is the specific volume। Okay, so this equation and this equation are not two different things, ये दोनों सेम। क्लियर? Okay, where r is the gas constant, and this equation is called ideal gas equation of state, and जो भी गैस इसको रिलेशन को ओबे करती है we call it ideal gas। okay, so in this equation P is the absolute pressure, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। T is the absolute temperature, this means we are either talking about kelvins or Rankine, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड नहीं यूज हो सकता। Similarly, this is absolute pressure, this means कि we are not using the gauge pressure और वैक्यूम प्रेशर्स, हमने एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। while V is the specific volume। okay, V is the specific volume, the gas constant R is different for each gas and is determined from, अच्छा ये जो गैस कांस्टेंट R है ना, it is a property of gas। ठीक है, it actually it is a standard unit, standard value for different gases। okay, and it is determined from Ru divided by M, where Ru is the universal gas constant and M is the molar mass। okay,
सो ये चीज़ें दीज आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, आर यू जो है ना, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल गैसेस, आर यू रिमेन्स द सेम, ऑल सब्सटेंसेस, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, सब्सटेंस चेंज भी हो जाए, आर यू रिमेन्स द सेम। However, for each gas, this molar mass changes. एंड एज दिस मोलर मास चेंजेस तो आपका आर जो है वो चेंज हो जाता है फॉर ईच सब्सटेंस, बट दिस आर यू फॉर ईच सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। और इस आर यू की वैल्यू से आप लोग वाकिफ होंगे फ्रॉम एफ एस सी एंड इवन डी ए इन केमिस्ट्री, नॉर्मली हम इसको स्टडी करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट। अच्छा, ये वैल्यूज ये सेम है, जस्ट यूनिट्स चेंज होने की वजह से ये वैल्यू चेंज हो रही है। Okay, so I hope this is clear. So normally 8.31447 kilojoule per kilomole Kelvin use करते हैं। Okay, for example R की value for different substance, air के लिए 0.287 kilojoule per kg Kelvin है। Okay, helium के लिए it is different, argon के लिए it is different, nitrogen के लिए it is different। Okay, but for all these the universal gas constant is still this value, वो सेम, जस्ट मोलर मास चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ओके, सो द मास ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोलर मास टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये डायरेक्ट आपने यूज नहीं करना कहीं, ये जस्ट थ्योरी के लिए है। ओके, द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ स्टेट कैन बी रिटन इन सेवरल फॉर्म्स। अब एक फॉर्म आइडियल गैस इक्वेशन की ये थी, ओके, पी वी इज इक्वल टू आर टी, या P इज इक्वल टू आर टाइम्स टी डिवाइड बाई वी। अब इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। दिस इज मोर नोन टू यू। ओके, इसी तरह इसको हम ये भी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। More commonly used formed in thermodynamics, mechanical engineering thermodynamics, is this one or this one. These ones. These both are same forms. ठीक है. Okay, so what is meant by this term? Sorry, this term. ये जो V, small v है, specific volume but with a bar. It means a bar above property denotes molar specific properties. ठीक है. In this case, this is molar specific volume based on unit mole basis. अब हम यहाँ पर kg की नहीं बात कर रहे, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या चीज़ है, मीटर क्यूब पर केजी, while molar specific volume is meter cube per kilomoles। Okay, okay जी। So by writing the equation PV is equal to MRT। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है, I'm talking about this equation, इसको अगर हम दो स्टेट्स के लिए लिखें, फॉर एग्जाम्पल द इनिशियली द गैस वॉज एट स्टेट वन, देन वी हैव मूव इट टू स्टेट टू, so we can write it at for state 1 P1 V1 is equal to MR T1, and for state P2 it will be P2 V2 is equal to MR T2. Remember that during this state change mass has not been changed। Okay, mass change नहीं हुआ। सिमिलरली आर एज अ गैस कांस्टेंट, तो आर की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। ठीक है, सो नाउ इफ वी इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, या हम इन दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, वी आर लेफ्ट विद पी वन वी वन अवर पी टू वी टू, दैट इज इक्वल टू टी वन अवर टी टू। अब हम इस P2 V2 को यहाँ ले आएं और T1 को नीचे ले जाएं, तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, सो दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? सो P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। और अगेन ये इक्वेशन भी आपने इन FSC, metric FSC कहीं देखी होगी। Okay, so an ideal gas is an imaginary substance। Okay, this is an imaginary substance। Ideal gas in reality does not exist। हाँ, we can approximate
some values, some gases as ideal gases, ठीक है. So normally it has been observed experimentally that uh, at low densities at low densities the real gases जो कि exist करती हैं they behave as ideal gas, ठीक है. अब इन real gases में भी there are some gases, for example, अच्छा पहले ये देख लें, low densities means low pressure and high temperatures. Okay. So at low pressures and high temperatures, the density of the gas decreases. ठीक है. And the gas behaves as an ideal gas under these conditions. So normally कौन कौन सी gases को हम ideal gas assume कर सकते हैं? At low pressures and high temperatures, in the range of practical interest, air, nitrogen, oxygen, hydrogen, helium, argon, neon, krypton, ये सारी जो हैं, these can be assumed as ideal gases. Even heavier gases such as carbon dioxide भी इन इसको भी हम assume कर सकते हैं that it is an ideal gas. Again, at lower temperatures and at low pressures and high temperatures. Okay. However, dense gases such as water vapor in steam power plants, या हम स्पेसिफिकली वाटर वेपर की स्टीम पावर प्लांट के अंदर बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि स्टीम पावर प्लांट में द प्रेशर्स आर वेरी हाई, ठीक है. सो हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर वाली जो रिक्वायरमेंट है वो अचीव नहीं हो रही, सो दैट इज़ वाई, ठीक है. सो लो पावर, इस केस में वाटर वेपर इन स्टीम पावर प्लांट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस. इसी तरह रेफ्रिजरेंट वेपर इन रेफ्रिजरेटर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस. आप देखेंगे कि इन केसेस में वी विल नॉट बी यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, rather we will use property tables, ठीक है. स्टीम पावर प्लांट के प्रॉब्लम्स में भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप स्टीम टेबल्स यूज़ करेंगे. सिमिलरली रेफ्रिजरेंट वेपर, जब रेफ्रिजरेशन के कोर्स में आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स तो वहाँ पर भी आप टेबल्स यूज़ करेंगे. बट इन कंप्रेसिबल फ्लो आइडियल गैसेस के केस में एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के केसेस में वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी इजी as compared to the steam tables. Okay. So अब क्या करना है आपने, आई थिंक जो न्यूमेरिकल मैं आपको ट्यूटोरियल सेशन एक अपलोड कर दूंगा. इट इज़ वेरी सिंपल. अभी के लिए हम क्लास को एंड करते हैं और फर्स्ट लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग.